Assalamu alaikum. Advocate Amin-ud-Din In the Supreme Court of Pakistan, Appellate Jurisdiction, present, Mr. Justice Sardar Tariq Masood, Mr. Justice Amin-ud-Din Khan, Mr. Justice Syed Hasan Azhar Rizvi, Civil Petition number 8L of 2023, against the order dated the 30th of November 2022 of the Lahore High Court. Lahore passed in WP number 3332 of 2022, Qudrat Ullah Petitioner versus Additional District Judge, Renala Khurd District Okara etc. Respondents. For the petitioners. In person, via video link from Lahore, for Respondents 3 and 4. In person, via video link from Lahore. Date of hearing. The 25th of January 2024. Judgment Syed Hasan Azhar Rizvi. J. Through this petition filed under Article 185, 3. Of the Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, 1973. The petitioner has called in question the order dated the 30th of November 2022 passed by the Lahore High Court whereby writ petition filed by him was dismissed. Factual Matrix 2. Succinctly. Facts of the case leading to filing of this petition are that the marriage between the petitioner, Qudrat Ullah, and Respondent number 3, MST. Sharma Nahid, took place on the 25th of March 2000. Out of the said wedlock, Respondent number 4, MST. Qudrat Ullah, was born. However, on account of strained relations, the marriage could not remain intact and they parted their ways. Respondent number 3 instituted a suit for recovery of maintenance for her minor daughter, Respondent number 4, when she was 6 months old, in the Court of Family Judge, Renala Khurd. Civil Petition number 8L of 2023, 2. Which was decreed vide judgment and decree dated the 10th of April 2007 at the rate of 1,000 rupees per month with 10% annual increase. Subsequently, on the 11th of March 2020 Respondent number 3 filed a family suit No. 157, J.F. C.2020 for enhancement of maintenance amount. That suit was decreed on the 8th of July 2021 and maintenance amount was enhanced to 5,000 rupees per with 10% annual increase by the learned family judge. Thereafter, Respondents preferred an appeal before the learned additional district judge, Renala Khurd. For further enhancement of maintenance which too was allowed and the maintenance amount for the Respondent number 4 was enhanced up to 25,000 rupees per month vide judgment and decree dated the 18th of December 2021. Being aggrieved, the petitioner filed a writ petition No. 3332/2022 before Lahore High Court, which was dismissed vide order dated the 30th of November 2022, impugned herein. Submissions of parties 3. Petitioner in person contends that his only source of income is the pension i.e. 60,000 rupees per month. That he has a family from second marriage, thus maintenance fixed is beyond his means. And that appellate court provided no plausible reasoning to justify such an exponential increase in the quantum of allowance. 4. On the other hand, Respondent number 3 while defending the impugned judgment contends that maintenance amount determined is necessary for the continuation of the studies of the Respondent number 4 who is currently studying engineering at Comsats University. And out of 8 semesters 4 semesters have been completed. 5. We have heard the parties at length and perused the available record. Now we discuss in Urdu. I am trying to English translate into Urdu so we understand easily the judgment.
सुप्रीम कोर्ट ऑफ सुप्रीम पाकिस्तान कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में अपील का दायरा इख्तियार मौजूदा मिस्टर जस्टिस सरदार तारिक मसूद, मिस्टर जस्टिस अमीन-उद-दिन खान, मिस्टर जस्टिस सैयद हुसन अजहर रिजवी 2023 की सिविल पिटीशन नंबर 8L लाहौर हाई कोर्ट के 30 नवंबर 2022 के हुक्म के खिलाफ लाहौर मंजूर WP 9-0-3332 ऑफ 2022 में दरखास्त गुजार कुदरत अल्लाह बमुकाबला एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रेनाला खुर्द जिला ओकारा वगैरह। जवाब दहिंदगान दरखास्त गुजारों के लिए जाती तौर पर लाहौर से वीडियो लिंक के जरिए, जवाब दहिंदगान के लिए 3 और 4 इंसान में लाहौर से वीडियो लिंक के जरिए समाअत की तारीख 25 जनवरी 2024। फैसला सैयद हुसन अजहर रिजवी जे के तहत दायर की गई इस दरखास्त के जरिए इस्लामी जमहूरिया के आइन का आर्टिकल 185(3) दरखास्त गुजार ने पाकिस्तान 1973 के हुक्म पर सवालिया निशान लगाया है। मोरखा 30 नवंबर 2022 को लाहौर हाई कोर्ट ने मंजूर किया, जिसके तहत रट उसकी तरफ से दायर दरखास्त खारिज कर दी गई। हकीकती मैटर गज़ 2 मुख्तसरा केस के हक़ाइक़ जो उसे दायर करने का बाइस बनते हैं। दरखास्त है कि दरखास्त गुजार कुदरत अल्लाह के दरमियान निकाह और जवाब दहिंदा नंबर 3 मोहतरमा शमा नाहिद ने हिस्सा लिया। 25 मार्च 2000 मज़कूरा शादी में से जवाब दहिंदा नंबर 4 मेगा स्टोन्स करा अलैन पैदा हुए, ताहम कशीदा ताल्लुकात की वजह से शादी बरकरार न रह सकी और वो अलग हो गए। जवाब दहिंदा नंबर 3 ने वसूली के लिए मुकदमा कायम किया। इसकी नाबालिग बेटी जवाब दहिंदा नंबर 4 की देखभाल जब वो 6 माह का था, फैमिली जज रेनाला खुर्द की अदालत में 2023 की सिविल पिटीशन नंबर 8L 2, जिसका फैसला मोरखा 10 अप्रैल 2007 को फैसले और हुक्मनामे के जरिए किया गया था। 10% सालाना इजाफे के साथ 1000 माहाना की शरह। इसके बाद 11 मार्च 2020 को जवाब दहिंदा नंबर 3 ने फैमिली सूट दायर किया। देखभाल की रकम में इजाफा के लिए नंबर 157 JFC 2020। वो सूट का फैसला 8 जुलाई 2021 को किया गया था और देखभाल की रकम थी सीखने वालों के 10% सालाना इजाफे के साथ 5000 तक बढ़ा दिया गया। फैमिली जज इसके बाद जवाब दहिंदगान ने पहले अपील को तरजीह दी। एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज रेनाला खुर्द ने मजीद कहा, देखभाल में इजाफा जिसकी भी इजाजत थी और जवाब दहिंदा नंबर 4 के लिए देखभाल की रकम तक बढ़ा दी गई। 25,000 माहाना। फैसले और हुक्मनामे के मुताबिक 18 दिसंबर 2021 परेशान होकर दरखास्त गुजार ने रेट पिटीशन दायर कर दी। लाहौर हाई कोर्ट के रूबरू नंबर 3332/2022, जिसे खारिज कर दिया गया। रेड ऑर्डर मोरखा 30 नवंबर 2022 यहाँ से मना किया गया है। पार्टियों की जुमा करवाना 3। दरखास्त गुजार जाती तौर पर दावा करता है कि उसका वाहिद जरिया है आमदनी पेंशन है, यानी 60 रुपए और सफर पैसे फी महीना के इसके पास एक है। दूसरी शादी से खानदान इस तरह तयशुदा कफालत इसके बस से बाहर है। इसका मतलब है और इस अपीलेट कोर्ट ने कोई माकूल दलील फराहम नहीं की कि मिक़दार में इस कदर तेजी से इजाफे का जुवाज पेश करने के लिए अलाउंस 4। दूसरी तरफ जवाब दहिंदा नंबर 3 दिफा करते हुए अम्प्यूज फैसले की बहाली की रकम का दावा है कि मुताला को जारी रखने के लिए तयन जरूरी है। जवाब दहिंदा नंबर 4 जो फिलहाल इंजीनियरिंग में ज़ेर तालीम है, COMSATS यूनिवर्सिटी, और 8 समसिटर्स में से 4 समसिटर्स हैं, मुकम्मल हो गया। 5 हमने फरीकैन को तवील अरसे से सुना है और इसका मुताला किया है। दस्तयाब रिकॉर्ड। Now we come at the page number 3.
Civil Petition number 8L of 2023. 3. Evaluating the scope of term, maintenance. 6. The important question that needs determination is whether a Muslim father is under an obligation to pay the expenses incurred on education of his daughter, children, or whether maintenance of child includes educational expenses. In order to answer this question, it is necessary to examine the definition of the term, maintenance. 7. In Pakistan, issues related to child maintenance are dealt with by the Muslim Family Laws Ordinance, 1961, and the West Pakistan Family Courts Act, 1964. However, these laws do not provide a specific definition for maintenance. For better understanding, it is suitable to rely on the dictionary meaning of the term. 8. The word maintenance is derived from Arabic word nafaq, which means to spend, and in literal sense, the word nafaqa means what a person spends on his family. The word maintenance has been defined in Black's Law Dictionary, 1 as under financial support given by one person to another. 9. It has been defined in Section 369 of the Principles of Mohammedan Law by D.F. Muller in following words. 369. Maintenance defined. Maintenance, in this chapter, includes food, raiment and lodging. Such definition of maintenance is not exhaustive. The word includes is generally used in interpretation clauses in order to enlarge the meaning of words or phrases occurring in the body of the statute, and when it is so used, those words or phrases must be construed as comprehending not only such things as they 1 Black's Law Dictionary, 9th edition, 2009. Civil Petition number 8L of 2023. 4. Signify according to their natural import, but also those things which the interpretation clause declares that they shall include. 10. In this view of the matter, it does not exclude other necessary expenses for mental and physical well-being of a minor. This view is also fortified by the judgment in Arslan Humayun and another 2, wherein it was held that Section 369 ibad has a wider connotation and should be given an extended meaning. For the purposes of social, physical, mental growth, upbringing and well-being of the minor. Legal framework of maintenance. Islamic Law 11. Undeniably, the Almighty Allah is the only sustainer, but He has created means through which this task is accomplished. Bearing the expenses of children is the second most important task of the father. 312. In Islamic law, maintenance is termed as nafaqa and signifies all those things which are necessary to support life. It is the legal and religious duty of a man to maintain his wife and children. The obligation to maintain wife and children is derived from the Holy Quran and is one of the incidences of marriage. Verse 233 of Surah Al-Baqarah says, "And it is incumbent upon him who has begotten the child to provide in a fair manner for their sustenance and clothing. 4 Furthermore, verse 34 of Surah An-Nisa enjoins, "Men are the protectors and maintainers of women because God has given the one more strength than the other and because they support them from their means." 13. Thus, right of child to be maintained by the father is ordained by Islamic law as mentioned above. 2 PLD 2013 South Carolina 557-3 NASA, Syed Hasan, Al-Mayek Spirituality Foundations, Crossroad, New York. 1987, page 147. 4 Holy Quran, 2-2. Now we discuss 2023 की सिविल पिटीशन नंबर 8L 3 टर्म देखभाल के दायरा कार का जायजा 6
اہم سوال جس کے لیے عزم کی ضرورت ہے، کیا ایک مسلمان باپ پر اخراجات کی ادائیگی واجب ہے؟ اس کی بیٹی، بچوں کی تعلیم پر خرچ کیا گیا یا کیا بچے کی دیکھ بھال میں تعلیمی اخراجات شامل ہیں؟ کرنے کے لیے اس سوال کا جواب، اس کی تعریف کا جائزہ لینا ضروری ہے۔ اصطلاح، بحالی، 7 پاکستان میں بچوں کی دیکھ بھال سے متعلق مسائل کو نمٹا جاتا ہے۔ مسلم فیملی لاز آرڈیننس 1961 اور مغرب کے ساتھ پاکستان فیملی کورٹس ایکٹ 1964۔ تاہم، یہ قوانین ایسا نہیں کرتے۔ دیکھ بھال کے لیے ایک مخصوص تعریف فراہم کریں۔ بہتر کے لیے اس کو سمجھنے کے لیے لغت کے معنی پر انحصار کرنا مناسب ہے۔ اصطلاح، 8 لفظ مینٹیننس عربی لفظ سے ماخوذ ہے۔ نفاق، جس کا مطلب ہے خرچ کرنا، اور لغوی معنی میں یہ لفظ ہے۔ نفقہ طبعاً فعل کا مطلب ہے کہ کوئی شخص اپنے گھر والوں پر خرچ کرتا ہے۔ بلیک کی لا ڈکشنری 1 میں لفظ مینٹیننس کی تعریف کی گئی ہے۔ ذیل کے طور پر، ایک شخص کی طرف سے دوسرے کو دی جانے والی مالی مدد۔ 9 اس کی تعریف کے اصولوں کی دفعہ 369 میں کی گئی ہے۔ محمدن لا ڈی ایف ملا کے درج ذیل الفاظ میں 369 دیکھ بھال کی وضاحت کی گئی ہے۔ اس میں مینٹیننس باب میں کھانا، لباس اور رہائش شامل ہے۔ دیکھ بھال کی ایسی تعریف مکمل نہیں ہے۔ دی لفظ شامل ہے عام طور پر تشریحی شفقوں میں ترتیب سے استعمال ہوتا ہے، جس میں پائے جانے والے الفاظ یا جملے کے معنی کو وسعت دینا آئین کے، اور جب یہ اس طرح استعمال ہوتا ہے تو وہ الفاظ یا جملے لازمی ہوتے ہیں۔ فہم کے طور پر سمجھا جائے، نہ صرف ایسی چیزیں جیسے وہ ایک بلیک ایس لا ڈکشنری 9واں ایڈیشن 2009 سول پٹیشن نمبر 8L of 2023 4 ان کی قدرتی درآمد کے مطابق اشارہ کریں، بلکہ وہ چیزیں بھی جس کی تشریح کی شرط اعلان کرتی ہے کہ وہ شامل ہوں گے۔ 10 معاملے کے اس نقطہ نظر میں، یہ دوسرے کو خارج نہیں کرتا نابالغ کی ذہنی اور جسمانی تندرستی کے لیے ضروری اخراجات۔ یہ قول ارسلان ہمایوں کے فیصلے سے بھی ثابت ہوتا ہے۔ دوسرا 2 جس میں یہ کہا گیا تھا کہ سیکشن 369 ایک وسیع تر ہے۔ مفہوم اور ایک توسیع معنی دیا جانا چاہیے کہ یہ سماجی، جسمانی، ذہنی نشو و نما، پرورش کے مقاصد اور نابالغ کی فلاح و بہبود۔ دیکھ بھال کا قانونی فریم ورک، اسلامی قانون 11 بلا شبہ اللہ تعالیٰ واحد رزق دینے والا ہے، لیکن اس نے اسباب پیدا کیے ہیں جن کے ذریعے یہ کام ہوتا ہے۔ مکمل بچوں کے اخراجات اٹھانا دوسرے نمبر پر ہے۔ باپ کا اہم کام 12 اسلامی قانون میں نفقہ کو نفقہ کہا جاتا ہے، طبعاً فعل اور ان تمام چیزوں کی نشاندہی کرتا ہے جو زندگی کو سہارا دینے کے لیے ضروری ہیں۔ یہ اپنی بیوی کو برقرار رکھنا مرد کا قانونی اور مذہبی فرض ہے۔ بچے، بیوی اور بچوں کی دیکھ بھال کی ذمہ داری ماخوذ ہے قرآن پاک سے اور شادی کے واقعات میں سے ایک ہے۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 233 میں ہے، اور یہ اس پر واجب ہے جس نے پیدا کیا ہے، بچے کو ان کی روزی کے لیے منصفانہ طریقے سے مہیا کرنا اور لباس۔ 4 مزید برآں سورہ نساء کی آیت نمبر 34 حکم دیتی ہے۔ مرد خواتین کے محافظ اور محافظ ہیں کیونکہ خدا نے ایک کو دوسرے سے زیادہ طاقت دی ہے اور کیونکہ وہ اپنے ذرائع سے ان کی حمایت کرتے ہیں۔ 13 اس طرح، بچے کا حق باپ کے پاس ہے۔ جیسا کہ اوپر ذکر کیا گیا ہے، اسلامی قانون کے ذریعہ ترتیب دیا گیا ہے۔ 2 PLD 2013 SC 557 3 نثر، سید حسین، اسلامی روحانیت کی بنیادیں، کراس روڈ، نیویارک، 1987۔ صفحہ 147۔ 4 القرآن 2 سے 233۔
Civil Petition Number 8-L of 2023, 5/14. Similarly, under Pakistani law, the maintenance of a child is an obligation primarily upon the father. The Family Courts Act 1964 and the Muslim Family Laws Ordinance 1961, MFLO, deal with the issue of maintenance of minors in Pakistan. Legal Framework of Maintenance International Law 15. All the civilized nations of the world have recognized that children have rights by virtue of being children. These obligations are also erga omnes 5 and have since been codified in the United Nations Convention on the Rights of the Child, 1989, the UNCRC. UNCRC is an international treaty which sets out the rights of children. The state of Pakistan ratified the UNCRC on the 12th of November 1990 with its only reservation that its articles will be interpreted in light of Islamic injunctions. However, in 1997, this reservation was withdrawn. Thus, ratification became absolute. 16. Article 27 of the UNCRC is reproduced below for ease of reference. 1. States parties recognize the right of every child to a standard of living adequate for the child's physical, mental, spiritual, moral and social development. 2. The parents or others responsible for the child have the primary responsibility to secure, within their abilities and financial capacities, the conditions of living necessary for the child's development. 3. States parties, in accordance with national conditions and within their means, shall take appropriate measures to assist parents and others responsible for the child to implement this right and shall in case of need provide material assistance and support programs, particularly with regard to nutrition, clothing and housing. 4. States parties shall take all appropriate measures to secure the recovery of maintenance for the child from the parents or other persons having financial responsibility for the child, both within the state party and from abroad. In particular, where the person having financial responsibility for the child lives in a state different from that of the child. States parties shall promote the accession to International 5 erga omnes means those obligations that are owed to international community as a whole. Civil Petition Number 8-L of 2023. 6. Agreements or the conclusion of such agreements, as well as the making of other appropriate arrangements. Said article must be read with Article 3 Paragraph 1 of the UNCRC, which reads as under. 1. In all actions concerning children, whether undertaken by public or private social welfare institutions, courts of law, administrative authorities or legislative bodies, the best interests of the child shall be a primary consideration. 17. The concept of the child's best interests is not new. Indeed, it predates the Convention and was already enshrined in the 1959 Declaration of the Rights of the Child, 6th the Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women, 1979, 7 as well as in regional instruments and many national and international laws. 818. When assessing and determining the best interests of a child, the obligation of the state to ensure the child such protection and care as is necessary for his or her well-being 9 should be taken into consideration. Children's well-being, in a broad sense, includes their basic material, physical, educational, and emotional needs, as well as needs for affection and safety. 1019. It is in the best interests of the child to have access to quality education, including early childhood education. All decisions on measures and actions concerning a specific child must respect the best interests of the child or children. With regard to education. 116 Declaration of Rights of Child, 1959, para. 2.
7 Article 5, B, and 16, 1, D. 8 UN Committee on the Rights of the Child, CRC, General Comment Number 14, 2013, on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration, Art. 3, Para. 1, the 29th of May 2013, CRC, C, GC, 14, Para. Point 2. 9 UN Convention on Rights of Children. 1969, Article 3 Para 2. 10 UN Committee on the Rights of the Child, CRC, General Comment Number 14, 2013, on the right of the child to have his or her best interests taken as a primary consideration, Art. 3, Para. 1, the 29th of May 2013, CRC, C, GC, 14, Para 71. 11 Ibid. 8L5-14 उसी तरह पाकिस्तानी कानून के तहत एक की देखभाल बच्चा बुनियादी तौर पर बाप पर फर्ज है। फैमिली कोड सेक्ट 1964 और मुस्लिम फैमिली लॉज ऑर्डिनेंस 1961 MFLO पाकिस्तान में नाबालिगों की देखभाल के मामले से निपटना। देखभाल का कानूनी फ्रेमवर्क बैनुल-अक़वामी कानून 15 दुनिया की तमाम मुहज़्ज़ब कौमों ने तस्लीम किया है कि बच्चे होने की वजह से बच्चों के हुकूक हैं। ये जिम्मेदारियां भी एगोमनस 5 है और इसके बाद से उनको कोडिफाई किया गया है। बच्चों के हुकूक पर अक़वाम मुत्तहिदा का कन्वेंशन 1989 UNCRC एक बैनुल-अक़वामी मुआहदा है जो तय करता है बच्चों के हुकूक। रियासत पाकिस्तान ने UNCRC की तौसीक़ की 12 नवंबर 1990 इसके सिर्फ रिजर्वेशन के साथ कि इसके मज़ामीन होंगे इस्लामी इकाम की रोशनी में तशरीह। ताहम 1997 में ये रिजर्वेशन वापस ले लिया गया। इस तरह तौसीक़ मुतलब बन गई। 16 UNCRC का आर्टिकल 27 आसानी के लिए झेल में दोबारा पेश किया गया है। हवाला 1 रियासती पार्टियां हर बच्चे के हक को तस्लीम करती हैं। बच्चे की जिस्मानी जिंदगी के लिए मुनासिब मयार जिंदगी, ज़हनी, रूहानी, अखलाकी और समाजी तरक्की। 2 वालिदैन या दूसरे बच्चे के जिम्मेदार हैं। उनके अंदर महफूज करने की बुनियादी जिम्मेदारी काबिलियत और माली सलाहियतें, जिंदगी के हालात बच्चे की नशोनुमा के लिए जरूरी है। 3 रियासती पार्टियां कौमी हालात के मुताबिक और उनके ज़राए के अंदर मुनासिब ले जाएगा वालिदैन और दीगर जिम्मेदारों की मदद के लिए इक़दामात बच्चा इस हक़ को नाफिज करेगा और उसकी सूरत में करेगा। मादी मदद और मदद फराहम करने की जरूरत है। प्रोग्राम खास तौर पर ग़िज़ायत के हवाले से लिबास और रहाइश। 4 रियासती पार्टियां तमाम मुनासिब इक़दामात करेंगी। बच्चे के लिए देखभाल की बहाली को महफूज बनाए वालिदैन या दीगर अफराद से बच्चे के लिए माली जिम्मेदारी दोनों के अंदर रियासती पार्टी और बैरून मुल्क से। खास तौर पर जहां वो शख्स जिस पर बच्चे की माली जिम्मेदारी हो एक ऐसी रियासत में रहता है जो बच्चे रियासतों से मुख्तलिफ हो। फरीक़ैन बैनुल-अक़वामी से इल्हाक़ को फ़रोग़ देंगे। 5 एगोमनस से मुराद वो जिम्मेदारियां हैं जो बैनुल-अक़वामी बरादरी के ज़िम्मा हैं। मजमूई तौर पर 2023 की सिविल पिटीशन नंबर 8L6 मुआहिदे या इस तरह के मुआहिदों का इख्तिताम, जैसे उसके साथ साथ दीगर मुनासिब इंतज़ामात करना। कहा गया आर्टिकल UNCRC के आर्टिकल 3 पैराग्राफ 1 के साथ पढ़ा जाना चाहिए, जो कि झेल में पड़ता है। 1 बच्चों से मुताल्लिक़ तमाम कार्रवाइयों में, चाहे किए गए हों सरकारी या निजी समाजी बहबूद के इदारों, अदालतों के जरिए कानून, इंतजामी हुक्काम या कानून साज इदारे, बच्चे के बेहतरीन मफादात बुनियादी होंगे। और 17 बच्चे के बेहतरीन मफादात का तस्वुर नया नहीं है। दरहकीकत ये कन्वेंशन से पहले की तारीख है और पहले ही इसमें शामिल था।
बच्चों के हुकूक का 1959 का इलामिया 6 कन्वेंशन खवातीन के खिलाफ हर कस्म के इम्तियाजी सलूक के खात्मे पर 1979 के साथ साथ इलाकाई आलात और बहुत से कौमी और बैन-अल-अक़वामी क़वानीन 0.818 एक के बेहतरीन मफादात का अंदाज़ा और तयन करते वक्त बच्चे के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना रियासत की जिम्मेदारी है और इसकी फलाह व बहबूद के लिए ज़रूरी ख्याल रखा जाना चाहिए। ज़ेर नज़र बच्चों की बहबूद एक वसी मानों में शामिल है। उनकी बुनियादी मादी, जिस्मानी, तालीमी और जज्बाती ज़रूरियात, इसके साथ साथ प्यार और हिफाजत की ज़रूरियात 19 इस तक रसाई हासिल करना बच्चे के बेहतरीन मफाद में है। मेयारी तालीम बशमूल इब्तिदाई बचपन की तालीम, तमाम मखसूस बच्चे से मुताल्लिक़ इक़दामात और इक़दामात के बारे में फैसले बच्चे या बच्चों के बेहतरीन मफादात का एहतराम करना चाहिए। तालीम के लिए 11 बच्चों के हुकूक का ऐलान 1959 पैरा 2 7 आर्टिकल 5B और 16(1)D 8 अक़वाम मुत्तहिदा की कमिटी बराए हुकूक अतफ़ाल CRC उमूमी तबसरा नंबर 14 2013 बच्चे के इस हक़ पर कि इसके बेहतरीन मफादात को बुनियादी हैसियत से लिया जाए और 8(3) पैरा 1 29 मई 2013 CRC CGC 14 पैरा 2 9 अक़वाम मुत्तहिदा का कन्वेंशन बराए हुकूक बच्चों 1969 आर्टिकल 3 पैरा 2 10 अक़वाम मुत्तहिदा की कमिटी बराए हुकूक अतफ़ाल CRC उमूमी तबसरा नंबर 14 2013 बच्चे के हक़ पर है कि इसके बेहतरीन मफादात को बतौर प्राइमरी लिया जाए और 8(3) पैरा 1 29 मई 2013 CRC CGC 14 पैरा 71 11 पैरा 23/7/20. The above discussion leads us to draw a conclusion that it would be absolutely safe to include educational expenses also within the concept of maintenance of a child. 21. Admittedly, Respondent number 4 is the unmarried daughter of the petitioner who is studying in COMSATS University. Thus, in order to meet her educational expenses, she requires sufficient amount. In the trial as well, Appellate Court Respondent number 3 has sufficiently established, with cogent evidence, that besides receiving pension, the petitioner has other sufficient sources of income. Thus, he has the ability to pay her educational expenses. 22. In the case of Allowance v. MST. Parveen Akhtar, 12, it has been held that, in interpreting the word maintenance, some reasonable standard must be adopted. Whilst it is not confined merely to food, clothing and lodging, it cannot, by any stretch of the imagination, be extended to incorporate within it education at higher levels ad infinitum. What is necessary to decide in this connection is to find out what amount of education has to be attained by the child concerned, having regard to the status and other circumstances of his family, to enable it to earn a complete livelihood by honest and decent means. What is required is that the child must be maintained until it is in a position to earn its own livelihood in an honest and decent manner in keeping with its family status. While applying the same interpretation, it can be noted that although petitioner is not bound to provide the maintenance for education at higher levels ad infinitum, however, he is duty-bound to provide maintenance to respondent number 4 till she completes her graduation studies and gains an employment to support herself. 23. We have carefully examined the impugned judgment as well as the judgment passed by the learned judge of the Appellate Court, that was upheld by High Court, and find that reasoning advanced by the Appellate Court is justified and plausible. Before 12 PLD 1970 South Carolina 75. Civil Petition number 8L of 2023. 8. Enhancing the maintenance amount.
The Appellate Court duly undertook expenses analysis and concluded that sum of 25,000 rupees per is required to ensure the continuation of the studies of the Respondent number 4. Therefore, the amount of maintenance so granted is neither excessive nor unjustified. 24. Normally, this court refrains from intervening in concurrent findings unless they are unreasonable, arbitrary, imaginative, or whimsical. Petitioner has failed to point out any illegality or infirmity, so also non-reading or misreading of evidence. Hence, no case for interference has been made out. 25. Consequently, this petition being devoid of merit is hereby dismissed and leave is refused. Judge Islamabad, the 25th of January 2024. Approved for reporting. Paris Zaf 7:20। मुंदरजा बाला बहस हमें इस नतीजे पर पहुंचाती है कि ये तालीमी अखराजात को भी शामिल करना बिल्कुल महफूज होगा। बच्ची की देखभाल के तस्वुर के अंदर। 21। इकरार, जवाब दहिंदा नंबर 4 की गैर शादी शुदा बेटी है। दरखास्त गुजार जो कामसीप्स यूनिवर्सिटी में ज़ेर तालीम है, इस तरह में अपने तालीमी अखराजात को पूरा करने के लिए उसे काफी दरकार है। रकम मुकदमे की समाअत में अपील। कोर्ट के जवाब दहिंदा नंबर 3 के पास भी है। इसके अलावा ठोस सबूत के साथ काफी हद तक कायम किया गया है। पेंशन वसूल करने के लिए दरखास्त गुजार के पास दीगर काफी ज़राए हैं। आमदनी इस तरह वो इसके तालीमी अखराजात अदा करने की सलाहियत रखता है। 22। अलिफ दीन बमुकाबला मुहतरमा के मामले में परवीन अख्तर 12 के पास है। मुनक्कद किया गया है कि एक लफ्ज़ देखभाल की तशरीह में कुछ माकूल मयार को अपनाना होगा, जबकि ये सिर्फ महदूद नहीं है। खाने, लिबास और रिहाइश तक, ये किसी भी हद तक नहीं हो सकता तख़य्युल को उसके अंदर शामिल करने के लिए बढ़ाया जाए। आला सतहों पर तालीम लामहदूद है। क्या इस सिलसिले में फैसला करना जरूरी है कि क्या मालूम किया जाए? तालीम की मिक़दार बच्चे को हासिल करनी होगी। मुतालिका हैसियत और दीगर के हवाले से इसके खानदान के हालात उसे एक मुकम्मल कमाने के काबिल बनाना, दयानतदाराना और मुहज़्ज़ब ज़राए से रोज़ी क्या ज़रूरत है ये है कि बच्चे को उस वक्त तक बरकरार रखा जाना चाहिए जब तक कि वो हालत में ना हो। ईमानदारी और मुहज़्ज़ब तरीके से अपनी रोज़ी कमाना इसकी खानदानी हैसियत को मद्देनज़र रखते हुए उसी तशरीह का इतलाक़ करते हुए ये नोट किया जा सकता है कि अगरचे दरखास्त गुजार इसकी देखभाल फराहम करने का पाबंद नहीं है, आला सतहों पर तालीम लामहदूद है, ताहम वो फर्ज है जब तक वो जवाब दहिंदा नंबर 4 को देखभाल फराहम करने की पाबंद हो। अपनी ग्रेजुएशन की तालीम मुकम्मल करता है और मुलाजमत हासिल करता है। खुद की हिमायत। 23। हमने बगौर फैसले का जायजा लिया है। उसके साथ साथ अपील के माहिर जज के जरिए सुनाया गया फैसला अदालत, जिसे हाई कोर्ट ने बरकरार रखा, और इसकी दलील तलाश करें। अपील कोर्ट की तरफ से पेश कदमी जायज और काबिल फहम है। इससे पहले 12 PLD 1970 SC 75 2023 की सिविल पिटीशन नंबर 8L 8 बहाली की रकम को बढ़ाना, अपील कोर्ट को मुनासिब तरीके से अखराजात का तज्जिया किया और ये नतीजा अख्ज़ किया कि रुपए की रकम के मुताला के तसलसल को यकीनी बनाने के लिए 25,000 की जरूरत है। जवाब दहिंदा नंबर 4। लिहाजा देखभाल की रकम इतनी अता ना तो ज्यादती है और ना ही नाजायज। 24। आमतौर पर ये अदालत मदाखलत करने से गुरेज करती है। हम वक्ती नताइज जब तक कि वो गैर माकूल, मनमानी ना हो, तसुराती या सनकी दरखास्त गुजार किसी की निशानदही करने में नाकाम रहा है। गैर कानूनी या कमजोरी उसी तरह सबूत को न पढ़ना या गलत पढ़ना, इसलिए मदाखलत का कोई केस सामने नहीं आया। 25। नतीजाता ये दरखास्त काबिलियत से खाली है। इस तरह बर्खास्त और रुखसत से इनकार कर दिया गया है। जज